Hello students of 12th class. Today we are discussing the poem Keeping Quiet. This is the third poem. In today's scenario, this poem is very important because of coronavirus. Coronavirus. Because quarantine is important. This keeping quiet has close relationship with quarantine. Keep yourself away from others. Social distancing. But this poem promotes mental social distancing. PM Modi provokes physical social distancing. This poem provokes mental social distancing. Keep quiet. What is the importance of keeping quiet? All the time we keep speaking. Speaking never means that I am speaking through tongue. Non-verbal speaking is also going on. We speak through gestures, but keeping quiet means quietness. In every possible way, quietness. Keeping quiet. What is the importance of keeping quiet? There are two S and S. These two S are opposite to each other. How? This first S is sound. S-O-U-N-D, sound. Second S is silence. Sound and silence. When there is sound, there can be no silence. And when there is silence, there can be no sound. In sound, everybody is different from everybody. Because everybody's sound is different from everybody. Even the members of the same family, their sound is different. You can easily recognize if there is well acquaintance with you, with others. By the sound of them, you can easily recognize who he is or she is. In sound, there is a variety. There is a difference. But in silence, there is a uniformity. In silence, we automatically become one. Togetherness is there. Togetherness is prevailed. In silence, we automatically become the part of the universe. We become the smallest instrument in the broad form of Krishna. A drop of water comes from the sky. It can say, it is dancing. It has its existence. But when it mingles in the sea, it becomes sea. It becomes silence. So, keeping quiet means observing silence. The silence is very, very important. Gita proclaims three types of actions: karma, akarma, and vikarma. Karma means we always perform something or the other. Even for a second, we can't remain without work. We are breathing in, breathing out. Heart is at work, pumping of heart, heartbeat going on. Non-stop activities. But akarma means your action minus your I-ness, your ego, is akarma. Nothing is mine. I am but the small instrument. I am the puppet at the hand of God. He is my puppeteer. He is my master. He is directing and I am activating. He has my switch on. When he switches on, I start doing something or the other. When he switches off, nothing can happen. That is akarma. We should experience akarma. Everybody
Another importance of keeping quiet. In the daytime, we have worked well. We are so tired. We want rest. In the night time, without any problem, we take rest. We sleep uninterruptedly. A rich man cannot sleep well because by money you can purchase good bed, not sleep, good medicine, not health. So this rest in the night time is my earning. By working hard in the daytime, I have earned the rest in the night time. It is my earning. Without sleep, without dream, I sleep uninterruptedly. I enjoy the rest. And when I have slept well, when I have rested well in the night time, I am so refreshed in the daytime. Work is required. It means work brings rest. Rest brings work. Work and rest are not opposite to each other. They are complement to each other. Let us suppose I'm not sleeping, I'm not resting, working and working and working. This working will definitely affect my work. Because by resting, by keeping quiet, we charge ourselves. And when we have charged well, it will bring our charging well, our keeping quiet will bring certainly excellency in the work we do. उत्कृष्टता लाएगा हमारे कार्य में. Keeping quiet. As we recharge our mobile, why do we recharge? Battery is recharged so that it can work well. So rest recharges us. Rest refreshes us. Why? In order to bring excellency in the work we do. And other importance of मैं रामायण देख रहा था, आ रही थी, कोई मेरे पास सज्जन आए, इन्होंने कहा क्या वेस्ट करते हो अपने समय को यार, काम किया करो, रामायण कितनी बार आप देख चुके हो, जब आई थी तब देखी, कितनी बार देख चुके हो, वो ही रामायण है, कोई अंतर नहीं आया, क्यों बार बार अपना टाइम वेस्ट करो, कुछ काम करो. मैंने उससे कहा कि आप हमेशा काम करते रहते हो. हाँ काम करता हूं मैं तो. मैंने कहा आप रात को सोते? हाँ सोता तो हूं. तो क्या आप बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेड के सो जाते हो? हाँ कभी कभी ड्रीम आते हैं, नींद आती नहीं है. तो भैया इस रामायण को सुनने से मुझे आनंद आ रहा है, ये आनंद से रहूंगा तो मैं आनंद से सोऊंगा, तो मैं रिचार्ज कर रहा हूं अपने आप को. एवरीबॉडीज डिवाइस ऑफ रिचार्जिंग इज डिफरेंट. राम आचार्य कहते हैं, श्री राम आचार्य गाते तपोभूमि के, आदमी कार्य की अधिकता से नहीं, उसको बोझ समझ के बेमन से करके वो थकता है. इफ वी सरेंडर, आई एम नॉट द डूअर, माई ऑलमाइटी इज डूअर, आई एम बट द पपेट एट द हैंड ऑफ, आई टोटली सरेंडर टू माई ऑलमाइटी. शरण में आज जो कुछ कर रहा है परमात्मा तू कर रहा, मैं कौन हूं करने वाला. तो हम थकेंगे नहीं. क्या चीज थकाती है हमको? मेरी मैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, इतना काम करता हूं, ये थकाता है. These parts of body are your servants. Use them. You are the master. In Rig Veda, there is a sutra. Naham dehi. Naham dehi. I am, but I am not the body. I am not the body. I am the master of this body. This body is my servant. So, this is the mental keeping quiet. While doing, my hand is doing, I'm not speaking. This part of my body it is speaking through the mouth. So this ego tires us. So we need recharging ourselves. If even there are many examples in the history of mankind, people while working automatically recharge themselves because of mentally they feel refreshed all the time. I'm not doing. So keeping quiet recharges ourselves. Otherwise, our work, last work will definitely be affected without keeping quiet, without resting. So keep quiet. Now the poet says,
The poet says, Pablo Neruda, in the poem Keeping Quiet, first two lines, now we will count to 12 and we will all keep still. Still means silence. Still means motionless. The poet says, I will count up to 12. I will count 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, and up to the counting of 12, you will keep quiet. What is the importance of why he wants to count up to 12 only? There are many causes. First reason of counting up to 12, there are 12 signs in the clock. 12 signs. 12 signs make day and night. 12 plus 12, day and night. The poet says, at least in round the clock, 50% part, means up to counting 12, take rest. Remaining 12, work. One reason of counting up to 12. Second reason, 12 are the months of the year. At least 1 year in the whole life, keep quiet. Third reason of keeping quiet, up to 12, importance of 12 in our Hindu mythology. There is importance of 12 days. After the cremation, 12 days is counted. After the cremation of the dead body, 12 days are counted. And 13th day is the divine day. Day of his salvation. Day of his mukti. तिरहवीं मुक्त होने का दिन होता है तिरहवीं. जो 12 दिन का जो उसका प्रोसेस थी कीपिंग क्वाइट की, 13वें दिन उसकी मुक्ति है. और थर्ड नेक्स्ट रीजन, गुरु नानक देव जो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु जी रहे हैं, गुरु नानक देव जी, बचपन में उनमें बड़ी साधु प्रवृत्ति थी. उनका हिसाब था जो कुछ हो रहा परमात्मा की कृपा से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, प्रसाद है. कभी मिठाई का प्रसाद मिल गया, कभी नमकीन का प्रसाद मिल गया, ऐसे कुछ अच्छे फल मिला, बुरा फल मिला, एक प्रसाद है. इस तरह जीवन यापन करते थे. उनके पिताजी ने कहा, नानक तो कुछ काम खत्म तो करता नहीं है, इतना काम है, देखो ये व्यापारी आए हुए, तुम इतना काम कर दे, इनके लिए अनाज तोल दे. ठीक है पिताजी. अनाज की ढेरी लगी हुई थी, उसने तराजू लिया, एक तराजू के पलड़े में 5 किलो का बाट रखा, एक से तोलता जा रहा है. एक ऐसा रख दिया, दूसरी तरफ रख दिया, 2, 3 तोलता जा रहा है, 4, 5, 11, 12, 13, 13, 13, 13 से आगे गिनती नहीं बढ़ रही थी उसकी, और नाज की ढेरी लग गई थी. उससे कई गुना ज्यादा इधर नाज हो गया था. उसके पिताजी आए, नानक क्या पागल हो गया तू, बर्बाद करेगा हमको. 13 से आगे गिनती नहीं होती, 14 नहीं होते, 15 नहीं होते, क्या हो गया. नानक देव जी ने जवाब दिया, 13 से परमात्मा की गिनती है, सब कुछ परमात्मा का, 13 मेरा कुछ नहीं. अब सब कुछ परमात्मा का है तो उसके आगे की गिनती हो ही नहीं सकती पिताजी, सब कुछ परमात्मा का है. 13, 13, 13, 13. तो 12 का महत्व यह है. 13 काउंटिंग इज द डिवाइन गॉड्स. 13. और सिखों के उनका देखा होगा, उनका सिंबल क्या होता है, सिखों का सिंबल एक, ये हिंदी का एक है, और ये इस तरह का सिंबल है सिखों का. इस तरह का सिंबल देखा होगा आपने. 13 क्योंकि ये डिवाइन नंबर है, ये डिवाइन नंबर है. तो सेकंड नेक्स्ट रीजन ऑफ काउंटिंग 12, लेट अस सपोज योर लाइफ इज ऑफ 100 years. Out of 100 years, at least for 1 day, keep quiet. 100 years means, let us suppose 100 years, 1 day. Means if your life is of 100 years, okay, in the whole life, 1 day keep quiet. And 1 day means some second will be there. Second. I guarantee not minutes. So some second keep quiet every day, the poet wants. कुछ
क्षण ही आप शांत हो जाओ, बक 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 करते रहते हो, हमेशा हमेशा बोलते रहते हो, कभी रेस्ट नहीं लेते. कीप क्वाइट. कितना सुंदर मैसेज पोइट का, कीप क्वाइट अप टू द काउंटिंग ऑफ 12. अब प्रश्न है हाउ टू कीप क्वाइट. देखो अगले स्टेंजा में पोइट क्या कहता है. पहला स्टेंजा क्या है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कीप स्टिल, 12 काउंटिंग. और एक और इंपॉर्टेंस बात है, अप टू काउंटिंग 12 देखिए, कीपिंग क्वाइट, इट इज द टाइटल ऑफ द पोएम. Now the count the numbers of the letters in the title, keeping KEEPING 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 plus quiet QUIET 1 2 3 4 5 7 plus 5 equal to 12. So poet wants to count up to 12. Now it is clear why does the poet want to count up to 12, to remain you silent, because of these reasons I have explained. Now the B point, how to keep quiet. For this the poet says, next stanza of the poem, second, for once on the face of the earth, face means surface of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second. 1 second. Stop for 1 second. Not move our arms so much. The poet suggests no language. Okay? No language. No movement of arm. These are the two. Because language creates problem. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करें आपहु शीतल को होए. कौन मानता कबीरदास जी के. लैंग्वेज मीन्स हम वी अब्यूज. अब्यूज मीन्स वी अब्यूज नॉट पॉसिबल थ्रू लैंग्वेज, विदाउट लैंग्वेज. वी यूज सम लैंग्वेज और द अदर व्हाइल अब्यूजिंग अदर्स. So language creates problem. Language is not only the language of the language of the world. We also speak. Means no language means speak not. We speak without language also. Through gesture we speak. This is also the gesture of goodness, excellent, and some gesture of negative will also be there. So the poet suggests not to speak any language, no language, verbal or non-verbal language. The poet says, speak no language and no movement of arm. Even if you are speaking no language, verbal or non-verbal, you are moving your arms, dishim. This will create problem. Stop, silence yourself. Arm is the part of the body. Means there are visible parts. You can say how to keep quiet. First of all, you can control your visible part. Visible part means actions of speaking. Second action, thinking. And doing. Okay, speaking and doing are the visible part. Control them. Movement of arm and others. And thinking should also be silent. Silence these three. Speaking, thinking and doing, silence them. Suspend them. This is to keep quiet. So now no language, no movement of arm. See effects of keeping quiet. Effects of keeping quiet. If keeping quiet is observed, what will be the effect of this keeping quiet? I have already said. Keeping quiet will create mutual understanding. First thing, mutual understanding. As a drop of water comes from the sky, when it gets mingled in the sea, it becomes a sea. It becomes oneness, togetherness. We shall experience. First is togetherness, oneness. Second thing, mutual understanding. Third thing, coexistence. Keeping quiet means
coexistence with one and all. We shall be able to coexist with the animals, with the birds, with the nature, with the human being. Because of the absence of coexistence and mutual understanding, people are always at war for some reason or for no reason even. Terrorists kill innocent people. What reason behind it? No reason. No doubt there is a political reason, but sometimes there is no reason. Innocent are being killed. So, what will be the effect of keeping quiet? Togetherness, oneness, mutual understanding, coexistence, and fourth, very very important, is self-introspection. Self-introspection means self-investigation. Try to know who you are. You are not as you look to be. You are different from as you look to be. Who you actually are. You are not the body. You are different from the body. So, self-investigation. Naham dehi. Chiti jal pavak gagan samira. Panch tattva yah adham sarira. Just after birth, from the birth, we have 5 elements. Below those 5 elements, Chiti jal pavak gagan samira. And in the end, these 5 elements get mingled with the elements. What remains? You are not these 5 elements. You are Nainam chindanti sastrani, Nainam dahati pavakaha, Nachainam kledoyantyapo, Nasosyati marutaha. You are this soul. You are this soul. You cannot be destroyed. So try to know your real self. That is the investigation. This investigation of your real self is possible only through keeping quiet. Meditation. This keeping quiet leads to meditation. Meditation, भारतीय संत के पास 1947 से पहले एक अंग्रेज आया और संत से कहा, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, संत भी इंग्लिश जानते थे, आप जरा मेरी टेंशन है इन्हें दूर कर दीजिए, कुछ बताइए। संत ने उसे कुछ क्रिया बताई। संत ने क्या किया, उसको शवासन का माध्यम दे लिया, शवासन करवाया। शवासन की प्रक्रिया में तो कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है करने दो, उसे देख, उसे दृष्टा, बी बिकम वाचर, बी बिकम स्पेक्टेटर। अब उससे पूछा लास्ट में, अब तेरी टेंशन मिटी, तेरी टेंशन मिटी, तो उसे लगा कि इस प्रोसेस का नाम है मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। तब से इसका नाम मेडिटेशन पड़ गया, मेडिटेशन, मेडिटेशन। तो यही तो है कीपिंग क्वाइट। दिस इज कीपिंग क्वाइट, meditation. So what will have effects of an exotic moment, strange, unusual moment we shall experience. Without rush, कोई उतावलापन नहीं होगा। उतावलापन परेशान करता है। We are in the process of meditation. एकदम उतावलापन आएगा, रस आएगा, कुछ करूं, बहुत देर हो गई। ध्यान रखना, if you pass 1 hour, if 1 hour in the meditation appears to be 1 second, it means you are in the right track of meditation. If 1 minute appears to be 1 hour, you are in the wrong. This is called ras, utavalapan. In the meditation, in the process of keeping quiet, when 1 hour, 1 hour appears to be 1 minute, it means you are on the right track. If 1 second appears to be 1 hour, I have spent 1 hour, nothing is happening, I'm not getting the peace of mind, it means you are in the rush, you are in the utavalapan. No engine. This body itself is an engine, is a device, mechanical device. You are using this engine, but you think this engine is you think this body is you. So in the keeping quiet, we shall be without engine, without rush. एक्सोटिक मोमेंट, अनयूजुअल मोमेंट, आनंद आएगा, आनंद की क्षण होगी। ध्यान रखना, द रिवर ऑफ लाइफ हैज 2 साइड्स। जीवन की नदी के 2 किनारे हैं।
दो किनारे क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या है 10वें चैप्टर में, हे अर्जुन समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, द्वंद्व। तो उस जीवन की नदी के दो किनारे हैं। दो किनारे, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये दो द्वंद्व हैं। ये दो किनारे कभी मिलते नहीं है। सुख है तो दुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है। दो किनारे हैं। ये दो किनारे क्या है? ये सिक्के के दो पहलू है। These two sides of the same coin. For the existence of the coin, the two sides are very, very important. In the same way, for the existence of life, these two sides, these two dvandva, opposite aspects are very, very important. A good is good because of bad. If bad is eliminated and destroyed completely, believe me, you will not be able to recognize good. We recognize good because of bad and vice versa. तो जीवन की नदी के दो किनारे हैं। आनंद क्या है? आनंद का मतलब द्वंद्वातीत होना, द्वंद्व से परे हो जाना, द्वंद्व से ऊपर उठ जाना, ये आनंद है। तो इसका भाव है एक्सोटिक मूवमेंट, आनंद के क्षण। सुख में आनंद नहीं है, दुख में दुख है, सुख में आनंद नहीं है। आनंद है सुख दुख से ऊपर की अवस्था, द्वंद्वातीत की अवस्था, दैट इज द एक्सोटिक मूवमेंट। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कीपिंग क्वाइट, मिडिल टेंशन। हम जब सुख में होते हैं तो टेंशन रहती है सुख चला ना जाए कहीं, क्योंकि ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। दिन है उसके बाद रात आनी, रात है तो फिर दिन आना है। चेंज इज इनएविटेबल, टुगेदरनेस। एंड नाउ अदर इफेक्ट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स इट इज नॉट द नॉन वायलेंस ऑफ महात्मा गांधी। आई डोंट एडवोकेट the non-violence of Mahatma Gandhi as non-violence. Why? यदि आप महात्मा गांधी क्या कहते थे, उदाहरण है, भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण है, और सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा या तो ऐसा करो नहीं तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। आमरण अनशन का मतलब अपने आप को मारूंगा, भूखा मारूंगा। अरे किसी के हाथ में चाकू है, आप किसी को सामने ऐसे मार रहे हो तो दूसरे की हत्या हो गई, उस चाकू का आप अपनी तरफ कर लो तो ये भी तो हत्या हुई ना। तो महात्मा गांधी यही तो करते थे, या तो ऐसा करो तो भूखा मर जाऊंगा। टू किल हिमसेल्फ इज आल्सो द वायलेंस। और सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर क्या कहते थे, इतनी सी बात पर आप महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति मर जाए तो भैया मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। इस छोटी सी बात पर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति मर जा रहा है, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। इट्स नॉट द एग्जांपल ऑफ नॉन वायलेंस। यू आर किलिंग योरसेल्फ। There should be no violence. Violence means the fishermen are going to the cold sea to hunt the whale. They must not injure others. Effect होगा keeping quiet का. The fishermen will not be harming the whales. And those people who are collecting salt at the shore of the sea, and during the process of collecting salt, their hands are injured. They will not injure, means give no injury to others as well as to yourself. No self injury. और क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कीपिंग क्वाइट का? नो वार ऑफ एनी टाइप। कोई युद्ध बंद हो जाएंगे, सब क्वाइट अपनाएंगे तो देयर विल बी नो वार। वार कौन से प्रकार के होते? ग्रीन वार। ग्रीन वार मीन्स व्हाट? वार अगेंस्ट नेचर, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स एंड ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ग्रीन वार, सेकंड मीनिंग ऑफ ग्रीन वार इज आल्सो देयर, प्रॉक्सी वार। वार मगर ग्रीन, हरियाली, ये ऑक्सीमोरोन है इसमें। ओके, किसी को हरियाली के माध्यम से बार का झांसा देना, बार का उद्देश्य तो है वार, पर ग्रीन झांसा दिया जा रहा शांति का, ग्रीननेस का, पीस का, झांसा दिया जा रहा ग्रीन का। So green war means proxy war. There should be no type of war, and wars with gas and fire. Wars are also fought with gas and fire. And nowadays the war, coronavirus is there. Biological weapons also more dangerous than the weapons, atom or hydrogen bomb. You see, today is the 5th April. That is the biological war through the coronavirus. More dangerous. When everybody in the world will keep quiet, then the effect of keeping quiet will be no war of any type. Green war, wars with gas and wars with fire will be suspended. There will be no yuddha, because in the war there is no survivor. युधिष्ठिर से पूछा
युद्ध के बाद आपको कैसा लग रहा है? उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा हस्तलपुर के इस राज दरबार में भीष्म पितामह, कर्ण आदि, द्रोणाचार्य आदि बैठा करते थे, मैं किस पर राज्य करूं? मैं तो मृतकों पर राज्य कर रहा हूं। देयर इज नो सर्वाइवर इन द वॉर। एंड पुट, और क्या है इफेक्ट पड़ेगा? पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वॉक। अब मैं अगला स्टेंजा पढ़ रहा हूं, देखो। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Hurt means injured hand. So it will be the effect of keeping quiet. और क्या होगा? Those who prepare green bars, bars with gas, bars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखो, और क्या? No war and put on clean clothes. Okay. About with brothers, walk about with the brothers. Effect ये होगा, we shall be having clean clothes. क्लॉथ्स क्लीन का मतलब ये नहीं है धोबी पर कपड़े धुलाओ, प्रेस करके पहनो, ये नहीं है मतलब क्लीन क्लॉथ्स का मतलब। यहां क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है योर कंसाइंस शुड बी विदाउट एनी डर्ट। व्हाट आर द डर्ट्स ऑफ योर इनर कंसाइंस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, अहंकार, ये आपके डर्ट हैं। जेलसी, एनवियस नेचर, एंगर, एवराइस, नेगेटिव थिंकिंग, these are your dirts which have covered your inner conscience. Clean. This body is the cloth. क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दिस शरीर इज बट ए क्लॉथ, वस्त्र। अब इस शरीर में क्या है? गंदा कैसे हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, इनसे गंदा हो गया है। एक कवि कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, और मान, बड़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ये हो। ये कपड़े, ये गंदे हैं आपके अंदर के। ये गंदगी, एक बात जब आप कीपिंग क्वाइट ऑब्जर्व करोगे, यू शैल बी फ्री फ्रॉम द डर्ट। योर बॉडी, योर क्लॉथ बॉडी विल बी क्लीन। यू विल बी पुटिंग ऑन योर क्लीन क्लॉथ, क्लीन बॉडी, free from every type of dirt, free from avarice, free from negativity, and walk about with brothers. And walk about with brothers. Brother is like-minded person. Regard everybody as the brother. Brother ऐसा नहीं है रावण विभीषण को मान रहा है। Brother means राम and लक्ष्मण, शत्रुघ्न and भरत. Brothers and walk about. ब्रदर्स तो है पर काम साथ साथ नहीं कर रहे, तो नो ब्रदर्स, साथ साथ चलने वाले ब्रदर्स। वॉक अबाउट विद ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। शेड, डूइंग नथिंग फॉर ए व्हाइल, फील दैट आई एम डूइंग नथिंग, हु एम आई टू डू। शेड, शेड का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, छत्र छाया। शेड का मतलब, अब जे एक बार युद्ध हुआ, महाभारत के युद्धों में भीष्म ने प्रतिज्ञा की, हे दुर्योधन, तो मुझे बहुत उकसा रहा है, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार डालूंगा। पांडव की सेना में हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा आज तक झूठी नहीं हुई। उन्होंने कहा अर्जुन को मारूंगा तो अर्जुन तो मरेगा, अर्जुन जी नहीं सकता, क्योंकि आज तक उनकी कोई प्रतिज्ञा झूठी साबित नहीं हुई है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कृष्ण को चक्र धारण करवाऊंगा, करवा दिया उन्होंने। जो जो प्रतिज्ञा की पूरी हुई। आज ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया, कर रहे हैं। पांडव सेना में हाहाकार मच गया, कृष्ण परेशान हो गए। अब कृष्ण ने सोचा मैं चारों तरफ हूं, मैं तो परेशान बहुत हूं, तो बहुत बेचैन हूं, बहुत ज्यादा बेचैन हूं। अर्जुन क्या कर रहा होगा इस स्थिति में, क्योंकि उसको तो मरना है कल। वो अर्जुन के पास गए। अर्जुन तो टांड दुपट्टा सो रहा था। अर्जुन तू क्या है? अरे कैसा, मुझे सोने दो। अर्जुन तुझे पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की? हाँ पता है। फिर भी तू सो कैसे पा रहा है? तुझे पता है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा आज तक झूठी नहीं हुई है? हाँ ये भी पता है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा आज तक झूठी नहीं हुई है, ये पता है तेरे को, और तेरे को मारने की प्रतिज्ञा की है, ये भी पता है तेरे को। तो भले आदमी तू कैसे बेचैन सो रहा है?
अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे लिए, जिसके लिए कृष्ण, तेरे जैसा महान पुरुष कृष्ण बेचैन हो जाए वो तो चैन से सोएगा। मैं तेरी छत्र छाया में हूं। सेड, अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया में छोड़ दो। डूइंग नथिंग करने वाला परमात्मा है। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग यू शैल एक्सपीरियंस। और यह आया है क्लीन क्लॉथ। एक गाना चलता है क्लीन क्लॉथ के लिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ओ प्यारे परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर हे हरिहर में हार गया, अब कैसे हार चढ़ाऊं। मैली चादर का मतलब है दिस बॉडी। So this is the first page and first stanza of the second page discussed. We have completely discussed through this note making first page of the poem NCERT book and first para of the second page. Two stanzas are to be discussed. Just wait. कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें। जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।